Okay, what is heap? Heap is it's a binary tree. It is not a binary search tree. Remember this thing. It is a binary tree, which is complete binary tree. Complete in the sense that I have already told you what is complete binary tree. Complete binary tree is such a binary tree which is fully packed in all the levels except the last level where it is filled in from left to right. Left से right की तरफ भरना शुरू होता है. Like this is a complete binary tree. This is also example of complete binary tree. This is also complete binary tree. This will not be complete binary tree क्योंकि अंदर वाली ये लाइनें आपकी लेवल वाइज ये राइट लेफ्ट से राइट की तरफ भरना चाहिए. ये complete binary tree अब नहीं है. That means even perfect binary tree is also a complete binary tree. So binary, it is binary heap or a heap data structure. It is a binary tree, which is basically a complete binary tree where all the levels are completely filled except possibly the last level. And last level, all the keys are as left as possible. Leftmost से वो भरना शुरू होती हैं. And because this is a complete binary tree or perfect binary, the best suitable data structure for that is array implementation. So with respect to, we will be using here array, not the linked list representation for the representation of heap data structure. If you are implementing heap, always use array concept implementation for the same because of the property of being complete or complete binary tree. There are two types of heap data structure. One is min heap and max heap based on the ordering property. Ordering means there is a special order in which the elements will be inserted. So what is special about min heap? In min heap, if you concentrate on every node, like in this node, it is always this value, the value of this node is always less than that of its children node. If you concentrate on this node, for every node in the binary this binary tree, for if you consider this node, this value is 15, which is always less than that of children node. If you consider this node, its value is always less than its children node. In min heap, the node always has got value of each node is greater than or equal to the value of its parent. You can do in the reverse side. That means value of that node is always this less than that of its children node. One and the same thing. Going for max heap property, every node inside the binary tree will have value greater than that of its child node. Now, we will be discussing the course of time max heap functionality only. So max heap means we will be discussing the heap sort algorithm where you will be giving the example with max heap. You can try the example with min heap the same way we are doing the max heap. So in max heap, every node has got value larger than that of its children. Now 40 and 45 say 100 zyada hai. If you concentrate on this node, this value of this node is always larger than that of its children. 40 is greater than 10 and 15. Similarly, 50 is greater than or equal to, there can be redundancy of the elements. Like if you go for operating system, you go for priority queue scheduling or process scheduling, two processes may have same priority value. So based on this notation, that this binary tree can have the same value also, same priority values. So you assume these are priority values. Now in this case, the value of the parent node can always be greater than or equal to that of children. This will be applicable for min heap also. Here 30 can also be there. For equality, you can go in either left or right direction. It hardly matters. Okay, coming to the next example, min heap is clear to you, max heap. So this is one more example of min heap. Here element, the node has got value less than that of its child node. This node has got value less than its child node and so on. For this purpose, for storing this, we will be using level order traversal. Level wise traverse the element and store the same in array. The first index of the first element will be 0. 0 element 1 is stored here. Second element will be stored at 1 index. Third element will be stored at second index. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Like this, your array elements are being stored level wise within the your array. Now what will happen, we have already discussed array representation. Given an array element AI, if you want to find the children of this AI element residing at index I, how to find the children index? If you go for, say, I want to find the child values indices of the element 3. 3 is present at A1 location. Now how to find these elements? Children are located at A3 and next element is located at A4. This is nothing but equal to 2 into I plus 1. This is I is here the index of the parent. This will be 2 into I plus 2. This is a general concept. 2 into I plus 1 is the index of the left child. 2 into I plus 2 is the index of the right child.
That means if I say index of one element, that will be 2 into 1 plus 1, that will be equal to 3. That means at A3 left child will be located. 2 into 1 plus 2, that means at A4 right child will be located, and so on. For any element at index AI, you can find the left child and right child like this. If you want to find the parent of a node, say I want to find the parent of a node, index of the node situated at third index, A3 का मुझे parent node निकालना है. Now how to get it done? This will be equal to I minus 1 divided by 2 if AI is the index of the element I. 3 का क्या आ जाएगा? 3 minus 1 divided by 2, this will be equal to 1. तो third index की node का parent का index क्या है? 1. Similarly, if you go for fourth index node, इसका parent भी 1 होगा. 4 minus 1 divided by 2. Go for integer division, it will truncate the decimal part, so you will be getting 1 here. Again the child node will have 1. Now cram this thing, that means for any ith node, the left child index will be 2 into I plus 1, right child index will be 2 into I plus 2 always, left and right child indices. And if you want to find the index of the parent node will always be I minus 1 divided by 2. Next, coming to the next, heap sort. It is a comparison based sorting algorithm, just like bubble sort, merge sort, selection sort, insertion sort, quick sort, etc. So but it is similar to somewhat selection sort. Selection sort में क्या होता है, array के अंदर आप जैसे largest निकालोगे, largest को यहाँ last में place कर दोगे, फिर array का size वो कम दायरा ले लेता है, उसमें से largest निकालोगे, फिर यहाँ place कर दोगे. It is somewhat similar in that manner. Heap data structure के अंदर भी वो लार्जेस्ट निकालता है, हीप का साइज कम करता जाता है. जैसे इसमें हम एरे का साइज, हम जो मैक्सिमम निकालने का साइज हम कम करते जाते हैं हर बार, क्योंकि दिस ऑलवेज द सेकंड लास्ट एलिमेंट व्हेन इट सेटल डाउन, we keep on decreasing the area from where you want to find the largest element. Similarly यहाँ पर एक टर्म आती है हीप साइज. एरे का साइज तो फिक्स होता है, अगर 10 एलिमेंट को सॉर्ट करना है तो एरे लेंथ और एरे साइज विल रिमेन 10, बट हीप साइज स्टार्ट करता है n से, फिर वो लार्जेस्ट एलिमेंट को सेटल डाउन करता है, फिर वो हीप साइज को n-1 बना देता है, फिर वो सेकंड लार्जेस्ट को सेटल डाउन करता है, फिर हीप साइज को n-2 बना देता है, टिल हीप साइज आपका 1 से पहले हीप साइज ग्रेटर देन 2 तक चलता है ये, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट ऑटोमेटिकली वो सेटल डाउन हो जाता है. तो हीप साइज हर बार वो डिक्रीज करता जाएगा एज यू कीप ऑन सेटलिंग डाउन द एलिमेंट्स इन हीप सॉर्ट एल्गोरिथम. Now this is array length, total number of elements in the array which are initially given to you, which might be useful for heap sort also or any other application. And heap size क्या होता है, उस टाइम में heap के अंदर कितने एलिमेंट स्टोर्ड होंगे. heap आपका वेरी करेगा n, then n-1, n-2 and so on. ये जीरो से लेके heap size कम से कम लीस्ट जीरो, मतलब कोई एलिमेंट नहीं रह गया, लेंथ तक जाएगा आपका. तो in nutshell heap size will keep on decreasing with the execution of the program. Now see this thing carefully. इस केस में if you go for this, there are these many leaf nodes are there. So if you scan this complete binary tree or a heap tree, this min heap example which is right now given in front of you, इस min heap में या complete binary tree के अंदर आपके leaf nodes कितनी होती हैं, what are the index of those leaf nodes, what are the indices of the non leaf nodes, or I can say internal nodes. तो आपकी अगर आप देखोगे इंटरनल नोड्स जो आपकी लीफ नोड नहीं है, इसमें लीफ नोड कौन कौन सी है, 5, 9 and 8. 3 leaf nodes are there, and what are the indices of those in form of array representation, that is 3, 4 and 5. Now number of nodes here are 6, n is 6 which is given to you. So the leaf nodes are always from n/2 till n-1. Throughout this slide I am using this coding point of view. I am starting my indices from 0 till n-1 onwards, but in e content what has been written, they have started from 1 to n. That is at your discretion, whatsoever you want to choose. For my purpose I have used the indices from 0 till n-1 just from programming point of view. So 3, 4, 5 are the indices of the leaf elements. If you can carefully see from here, these are the only 3 leaf elements. So how to go for generalize the concept? If n is 6, the number of leaf node indices will be from 3, 4, 5, that is 6/2 till n-1, that is equal to 5. So leaf nodes are always from n/2 till n-1. You can cram this thing also. That means non-leaf nodes are from 0 till n/2 minus of 1. Non-leaves are from 0 to that index is 2, and leaf nodes are from n/2 till n-1. You have to remember this thing because this terminology will be used in subsequent slides.
So these are the indices of non-leaf nodes. These are the indices of the leaf nodes in any complete binary tree. Any complete binary tree. Now this is the logic. I will directly switch to the logic first of all. Then I will explain every tidbit one by one. So what is inside this? It's a heap sort logic. So heap sort logic, you have to sort the array, integer array with n elements. So there is one mechanism. This set of instructions are roughly being technically be called build heap. Build heap means first you will create a, given the array, first you will create a heap data structure for that array. After that you will be applying the further sequence. So you just see carefully in every code of this, there is one function which will be used, max cp5 function. Max cp5 function here also. So we will first discuss what is max cp5, then we will discuss what is the meaning of build heap, which is the using max cp5 function implicitly. Then we will going further step by step for heap sort algorithm. Now what max heapify does. Now we are here taking the example of max heap always. Max heap says that your parent node always have value greater than or equal to that of children node. Equal to can come in either way. Even in min heap also, your parent can go have value less than or equal to that of child node. Remember this thing. So equal to can come either as a child node, hardly matters. It child can, the same value can be on left or right side. It doesn't matter at all in case of heap sort algorithm. Now what will happen, this is max heap, this value parent will always have value greater than that of child. Child will have less value or equal to value, and parent will have larger value. So max cp5 is a special function. What it does, it tries to place any ith index node at its proper position such that this final subtree starting from this ith index becomes a max heap itself. It satisfies the property of max heap. That means every node has got a value which is greater than or equal to that of children node. So we will starting with one index I. That means within the array, we will starting with the particular index for that. It takes the index of the array and the array name along with the number of elements in the array. This is not the number of elements in the array. This is the size of the heap. Remember this thing. Why I'm specifying a size of heap? Because every time one element settles down, heap size decreases to one step further, just like we did in selection sort. So heap size initially is equal to number of elements in the array, then it will keep on decreasing the value of n as you progress further in that algorithm. So where you can apply this max cp5 function, with this assumption, there is one main assumption that left and right children of subtree, this max cp5 is applicable on that ith index element only when this left subtree of this ith index node and right subtree of the ith index node, it is already fulfilling the max heap property. Only then it is applicable. So this is fulfilling max heap property because 14 is greater than that of its children. It is a max heap. Okay. This is also max heap because parent node is greater than that of the child node. So if both these are max heap, only then we can apply max cp5 function on any ith index node. Now, how to apply this max cp5 function? Just discuss. Let us discuss one by one. For the ith node, what you have to do? Assume that the largest. We'll discuss what is the largest. Code says if you want to re-heapify, or you can say max heapify the node starting from this index I, you have to settle down. Swap this value, ith index value, with the largest of its children value. Now, largest of children value is this 14 and that of 7. Out of 14 and 7, which one is largest? So you will be replacing it with 14 here, then 4 here. But what it will do, once you are replacing 14 with 4, that means largest will pop out at this position, 4 will come at this position. Now this may happen that this coming out of this swapping value, this 4 may disturb the downward tree also. Now downward tree says in the left it has got 2, right it has got a. This is now again it started violating the property of this subtree. Again repeat the task, apply the max cp5 function recursively on this index I now. Earlier the index I was this one. Now just to verify, apply the max cp5 function this index I. When you apply max cp5 function, this 8 will be replaced by 4 here, largest of 2. Again make I as this index, because this may happen that there might be some subtree which might be violating.
Now this doesn't have any left and right child, so the system will stop here itself. So the output of this will be 4, 14, 7, 8, 2, 4 and 1. When you applied max CP5 on the index I here, whatsoever the I index, it can be 0 index or any subtree value for that. Got it? Now how to go for this? If you are trying to go for this example, so I initially we are taking some index, largest index, that means with whom to swap this value. So largest next time will become this 14. So largest index is I index. At ith index, let the index, this may happen that initially the value itself is 40 and your algorithm is applying max CP5 on this value. So 40, when you are applying on this value, you need not exchange the largest index with whom you are exchanging with I. This will remain the same. So we will initialize the index largest is equal to I here. Then we will getting the left index, then right index. Left is 2 into I plus 1. Right is 2 into I plus 2. Largest will keep track of that index with which you will be swapping a I value, L value at ith index. So this will become left, this will become right. Now check whether left and right are within the boundary of the array. Left should never be less than equal to, maximum range of this should be at the most equal to n minus 1. If it is exceeding n minus 1, now if you say in this case, for this any sub example, if this at some moment this is say I, and this is left and this is right. So left is exceeded in terms of the heap size. Heap size is still this one only, which is given to you, n number of elements initially. So L should, indices should be within the boundary of n minus 1. Similarly, R should be within the boundary of n minus 1. Then compare if largest is, this value is greater than A of left. If it is yes, now first you go for the left side value. If it is greater than this one, the largest will become this one. The largest will come now to be this index. Largest, basically what we are keeping track of, we are keeping that index value in hand which is greater than value. Now at last largest will point to this one. If this would have been 7, this would have been 14, largest would have been pointing to this one. So largest will be updated according to whether element is greater than largest, according left or right. We're comparing with both of these. These are not else if statement, this simple if statement. So largest will get the index of this element, which is the largest value, not equal to AI, then you are going to swap it. If largest is already equal to AI, which is, let us suppose for I is equal to 40 value, AI 40 value, the largest is equal to AI, no need to swap anything. If largest is not equal to AI, here largest is pointing to 14th element index and I is pointing to 4th index element, swap these two values. You swapped it. After swapping, now your 14 value will come here, 4 will here come here. Now this subtree might be have been disturbed, so you will be again applying recursively max CP5 function for the same heap size, now keeping largest index as a index of the element to be settled down. Earlier we were applying max CP5 to settle down ith index element. Now you will applying largest index element. This will keep on traversing and at last largest will become equal to less than n minus 1. Your system will come out from there. Largest will become equal to I. For that basis, your max CP5 will stop calling itself further. Okay. Next is, this is some example of the same what we have done so far. So initially, say you are applying max CP5, let us suppose at A1 you want to call. Because if you see carefully, only A1 is being disturbed. This chunk of zone is being disturbed. If you're calling max CP5 on the element index at I is equal to 1 roughly, so what will happen? You will be swapping A1 with A3 because it's the largest element out of these two children. A1 and A3 is being swapped. So you are coming at this. Now again, you will be calling max CP5 again at index A, 3 because now 3 is violating the property. Then A3 and A8 will be swapped. 8 will come here, 4 will come in here and so on. Now coming to the build max Higgs property. Now remember this thing, I have used max CP5 function in the earlier slide. What was the purpose of this max CP5? First of all, max CP5 can be applied on any index AI and this second term will reflect the heap size which has to be entered inside this at any index of the array, with this assumption and condition that left subtree is already a max heap and right subtree is already a max heap. This is the condition for applying max CP5. It settles down and builds the heap starting from I till the last index. It resettle down
It builds the heap for this fraction of the zone. Now, what is build max heap function? Given the array element, first you create a heap of that array element. We'll discuss one by one how to create. Any jumbled array which you want to sort is given. You have to arrange those elements in such a manner so that it will create a max. It will create on the whole of the elements will be arranged in this section so that it will fulfill the properties of max heap function. So for a given array, first we will be creating the max heap of that. Whatsoever the array element we want to sort. Let us suppose this is the array we wanted to sort. The array was given like this: 4, 1, 3, 2, 16, 9, 10, 14, 8, 7. I am writing in the form of heap initially. This is a direct representation of the array, like 4, left में 1, फिर 3, फिर 2, 16, 9, 10 and so on. This is the array element I want to sort. The first step in heap sort says first create a max heap from this. Now this is not a max heap. If you carefully see, 4 के लेफ्ट में 1 ठीक है, राइट में 3 भी ठीक है, मैक्स हीप है. 1 के लेफ्ट में बड़ा वैल्यू है. Now this is not a max heap. यहाँ पर कंडीशन वायलेट हो गई. If you see carefully, 3 के लेफ्ट में बड़ी वैल्यू है. Now it is not a max heap. It is also not a max heap. यहाँ पर भी max heap की यहाँ पर ठीक हो रही है वैल्यूज. So what is the purpose? First, given an array which you want to sort, build a max heap for that, which will fulfill all the properties of the max heap condition at every level. तो करना कैसे है आपको? अब देखो, what I was saying, max heap was being heapify function was being applied on the ith index. From I onward till last, your heap tree will be created. And with this condition, what was the main condition? Left and right subtree should already be a max heap in that case. तो करना कैसे है? अब इफ यू सी केयरफुली, लीफ नोड्स के ऊपर मैक्स सीपीफाई लगाने का फायदा नहीं, क्योंकि लीफ नोड के लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड तो होते ही नहीं है. दैट इज यूजलेस टू अप्लाई. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द प्रीवियस स्लाइड हाउ मेनी लीफ नोड्स आर देयर, n/2 till n-1 लीफ. यू कैन डिस्कार्ड दीज लीफ नोड्स फॉर योर पर्पस, क्योंकि इसमें n/2 till n रफली 50% नोड के ऊपर हमें एल्गोरिथम को लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी ही लीफ नोड्स हैं. So we'll be starting from these, will be applying max cp5 functions on 0 till n/2 -1. ये आपकी जो नॉन लीफ नोड्स के इंडिसेस हैं उसके ऊपर आप max cp5 फंक्शन लगाएंगे. Now max cp5 लगाना कैसे है? ये remember this thing, will not start from 0 index node. We'll be starting from n last index node, that is n/2 -1 index node. Reason being, आपका ये कंडीशन थी कि आपकी लास्ट नोड अगर हम स्टार्टिंग नोड से करते हैं तो लेफ्ट एंड राइट योर दैट वैल्यू शुड ऑलवेज बी अ मैक्स ही. तो इस कंडीशन में अगर आप इसकी बात यहां से शुरू करोगे, दिस विल बी सर्विंग द पर्पस. तो आपका लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री आपका वो मिन आपका ऑलरेडी मैक्स हीप होना चाहिए. फ्रॉम दैट ऑनवर्ड यू कैन स्टार्ट अप्लाइंग योर मैक्स हीप प्रॉपर्टी. तो आप अगर नीचे से शुरू करोगे आपका मैक्स हीप बनता जाएगा. जैसे यहाँ तक आपने कर लिया, ये नोड कर ली, फिर ये नोड कर ली, तो यहाँ तक आपका मैक्स हीप बन जाएगा. जब आप इसके ऊपर आओगे तो यू विल बी एबल टू अप्लाई मैक्स हीप, बिकॉज लेफ्ट एंड राइट सब ट्री आर ऑलरेडी अ मैक्स हीप. तो यू विल बी ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम n/2 -1 लास्ट इंडिसेस से शुरू करके स्टार्टिंग इंडेक्स रिवर्स डायरेक्शन में मैक्स हीपिफाई फंक्शनों को आप लगाओगे. And is same here, heap size is the same one where you will applying for the, because you want to apply this build max heapify function, heap function for whole of the array. So your heap size will not be decreased. Heap size is only will decrease when one of the elements settle down. Here nothing is being settled down. We are creating a heap tree or building a max heap for whole chunk of the array. So what will be happening? Like you will be starting from the 16th index, say. So if you are getting the number of elements here are 10, so I have already told you 0 till n/2 -1 elements. Here you will be applying max cp5 function. So number of elements are from 0 to 4. You will be starting reverse direction from 4 till 0. So first you will be applying max cp5 on the 4th index. Luckily this is already smaller, so this will not create any problem. It is smaller than this. So your 4, after that you will be coming to 4, then 3, then 2, then 1, then 0. After third index, you will coming to this third index. Now apply max cp5 function on this zone. Left is already heap free, right is already heap free.
When you are applying on this direction, you will be getting 14 here, 2 here and 8 here after max CP5 function. Then you will applying that on second index somewhat here. Apply max CP5 function on starting from this index I equal to 2. When you are applying, 10 will come at upper end, 3 will go downward like this. 10 and 3 will be swapped. Then you will applying for max CP5 at one index. For one index, now you know till this, what is the reason of doing reverse direction? Till this left subtree of this one index node and right subtree, they are already max heap. That is the reason we are trying from the decreasing order from n by 2 minus 1 till 0. Now this is max heap, this is also max heap. Now when you're settled now 1 here, so this 1 will be replaced using max CP5 function by 16, largest character child value. 16 will come here, 1 will go here within max CP5 function. When 1 and 7 are compared, so 1 will come here, 7 will go here. So this is the final value, 16, 7 and 1 will come like this. Then go for max CPA function at I is equal to 0. Internally this will be done automatically like this. So you will be applying max CP5 function on I is equal to this left subtree is max already max heap, right subtree is already max heap. You will be traversing it, you will be comparing with the largest element, largest child is 10. So 10 and 4 will be 10, 16 will come here, 4 will come here, then 4 and 14, 14 and 7, 4 your 4 will come here, 14 will come at this index position, 4 and 8 will be compared, 4 will become here, 8 will come here. In this manner you will be getting the final result. So this is nothing but the max output of the max build heap function. Build max heap function means we are building a maximum heap of the original array. This was the original array content which you wanted to sort. This original array, after applying max heap function on the 50% values, that is starting from n by 2 minus 1 till 0, you got a max heap. You built a max heap from that. You built a max heap from this. This is the final output of after building this max heap, and this is the final array which will be further used for sorting purpose. Now what you got for the given array element, this is one more example. Given array A, अभी हमने heap sort नहीं लगाया, we just are doing the first preliminary condition of applying max heap function. So given array A which you want to sort, first you have to create a max heap of that. How to create? This is the array. If you go pictorially, you will have to draw this level wise. 5 left में 3, right में 17, left में 10, right में 18, फिर left 17 के left में 9 and 6. Level wise आपको draw करना पड़ेगा. So after drawing this, now you from where to start? N elements are here. Elements are 9. You can count the number of elements. You will have to apply max CP5 function from 0 to n by 2 minus 1. Because these are non-leaf nodes, rest are leaf nodes. We won't be applying max CP5 function on leaf nodes. So you will be starting from n by 2, that is 4, 9 by 2, that is 4.5, just to take the truncate the decimal part. 4 minus 1, that means from third index, then you will applying in the reverse manner. Second index, max CP5 function, first index, 0 index, till this. So you will be applying max CP5 on these 4 set of indices, one by one, starting from 3, 2, 1 and 0. First you apply the max CPA function on the third index. तो third index पे आपने apply किया, 22 यहाँ है, 9 वैल्यू यहाँ पर है, तो max CPA function क्या करेगा, यहाँ 10 लगा देगा, यहाँ कर देगा 22. तो यहाँ तक आपका ये आपका max CP5 हो गया, build हो गया यहाँ तक. Then logic says go to the indices 2. Now when you are switching to index 2, तो index 2 के कॉर्स यहाँ तक आप settle down हो चुका है. ये heap function आपका पहले हम कर चुके हैं, मैक्स ही बिल्ड हो चुका है यहाँ तक. When you went to second index, तो ये 17 यहाँ, सॉरी हाँ 17 यहाँ आ जाएगा, 19 क्योंकि दोनों में से बड़ा 19 है, तो ये भी आपका सेटल डाउन हो गया मैक्स CP5 फंक्शन से. अब आ रहा है 2 के बाद इंडेक्स आ रहा है 1, तो 1 इंडेक्स में यहाँ पर गए, इट इज ऑलरेडी अ मैक्स हीप फंक्शन, मैक्स हीप, इट इज आल्सो मैक्स हीप विद सिंगल नोड. दोनों में से कंपेयर हुआ 22 और 84, 3 यहाँ आ जाएगा, 84 चला जाएगा ऊपर अकॉर्डिंग टू मैक्स CP5 लॉजिक. तो ये आपका यहाँ तक सेटल डाउन हो गया. Now you will apply max CP5 function on 0. Now this subtree is already max heap. This is also max heap. Now you are applying on I is equal to 0. दोनों में से चाइल्ड में से लार्जेस्ट 84 है, 84 से स्वैप हो जाएगा और आपका 5, if I go carefully see, 84 यहाँ पर, 5 आ जाएगा यहाँ पर, फिर 5 अपने चाइल्ड नोड से कंपेयर होगा 22 और 3 के साथ,
तो 22 आ जाएगा यहाँ पर, 5 आ जाएगा यहाँ पर, फिर ये अपने चिल्ड्रन के साथ कंपेयर होगा, 10 और 9 से कंपेयर होगा, लार्जेस्ट कौन सा 10 है, तो आपका यहाँ आ जाएगा 10, यहाँ आ जाएगा आपका 5. इफ यू सी केयरफुल, दिस इज द आउटपुट विच आई हैव ऑलरेडी शोन यू एट द अपर एंड. तो ये आपका जो सब ट्री है, नाउ दिस इज द फंक्शन कॉल्ड build max heap. So this is function is using what it is basically doing from n by 2 minus 1 to and I is equal to 0. ये max heapify फंक्शन कॉल कर रहा है एरे ए के ऊपर. हीप साइज अभी हमने फिक्स ही रखा है n, और i इंडेक्स वाले एलिमेंट को सेटल डाउन करके हमने ये फाइनल एक एरे, एक मैक्स हीप बना लिया, बिल्ड कर लिया. तो आउटपुट ऑफ दिस विल बी दिस एरे. तो ओरिजिनल एरे आपका था, दिस वाज द ओरिजिनल एरे. After applying, this was original array. After applying build max heap function, you got the array this one. इस array के ऊपर अब आप लगाओगे further function to sort this array. तो heap sort the number of element n. तो this is the logic we have done. यहाँ तक हम कर चुके हैं ब्लू कलर में, n by 2 minus 1 से लेके i greater than 0. मैक्स heapify array heap size फिक्स रखा है, i इंडेक्स के एलिमेंट को सेटल डाउन किया. ये पूरे के पूरे एरे एलिमेंट्स को ऐसे सेटल डाउन कर देगा, एक मैक्स हीप पूरे एलिमेंट्स का एक बिल्ड मैक्स हीप फंक्शन आपका लग जाएगा. बिल्ड मैक्स हीप, तो मैक्स हीप को बिल्ड कर देगा, सारे जो एरे एलिमेंट्स रीसेट हो जाएंगे ताकि वो मैक्स हीप की प्रॉपर्टी को ओबे कर रहे होंगे, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर. उसके बाद क्या है आपको, ये लॉजिक है आपका मेन सॉर्टिंग का. आफ्टर यू हैव कंस्ट्रक्टेड द हीप ऑफ दैट, नाउ व्हाट इज इनसाइड दिस लॉजिक. So this is also using max heapify function. We'll discuss this logic one by one. इस लॉजिक में यही एग्जांपल दी है. इफ यू वांट टू सॉर्ट द सेट ऑफ एरे एलिमेंट्स, यू गेट दीज आर द सीक्वेंस ऑफ द एलिमेंट्स व्हिच आर बीइंग टेकन एज इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड. इसके ऊपर मैंने मैक्स हीप लगाया. मैक्स हीप आपने लास्ट जो आपका नॉन लीफ नोड है, लास्ट नोड नॉन लीफ नोड ये है, क्योंकि ये सारे लीफ नोड्स हैं, ये भी लीफ नोड है, ये भी लीफ है, ये भी लीफ है. फर्स्ट इसके ऊपर मैक्स हीपीफाई लगाया, फिर मैक्स हीपीफाई लगाया 4 के ऊपर, इसके ऊपर लगाया तो ये कोई दिक्कत नहीं है, ऑलरेडी लार्जेस्ट है. फिर 4 के ऊपर लगाया, 4 सेटल डाउन होगा, 4 यहाँ आ जाएगा, 7 आ जाएगा यहाँ. ये आपकी आउटपुट है बिल्ड हीप की, मैक्स बिल्ड हीप जो आप लगा चुके हैं, व्हिच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. वंस यू गॉट दिस आउटपुट, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप व्हिच विल बी डन. कहते हाउ टू सॉर्ट इट फर्दर. नाउ यू, दिस वाज द ओरिजिनल एरे, वी अप्लाइड मैक्स बिल्ड हीप, बिल्ड मैक्स हीप फंक्शन. तो ये आपका मैक्स हीप का फंक्शन बन गया, ये मैंने यहाँ ड्रा कर दिया. लॉजिक क्या कहता है, हाउ टू सॉर्ट दोस एरे एलिमेंट. कहते फर्स्ट हमारा जैसे ये एलिमेंट है, तो अगर मैं एरे का सॉर्टेड आउटपुट देखूं, इसमें लार्जेस्ट एलिमेंट इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना हो, रिमेंबर दिस थिंग, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना हो तो आप मैक्स हीप वाला कंसेप्ट यूज करोगे. अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो मिन हीप का कंसेप्ट यूज करोगे. तो पेपर में आ जाए, यू शुड ऑप्ट फॉर दैट, इन दैट डायरेक्शन ओनली. तो अभी हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है. जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, एरे के लार्जेस्ट एलिमेंट लास्ट में आपका सेटल डाउन हो जाता है. तो व्हाट यू हैव टू डू, you know in max heap function, remember this thing, otherwise there might be jumble. In max heap function, root node always contains the largest element. Remaining any jumbled element, set of elements can be there, but root node will always contain the largest element. It's clear from the logic itself. So this root node has got largest element. If you go scan it carefully, so this is the array representation of that. We want to keep ultimately this 7 at the largest element at the last index, as it is clear from the output itself. So what we will doing, you will be merely swapping the largest element with the last index element, whatsoever it is. So you what the algorithm says, swap the largest element with the last element of this. So you swap these two, that means 7 has now settled down at its proper position. So after swapping, your element will be now 2, 4, 3, 1, 7 has settled down. Now your heap size will be reduced. अब heap size आपका एक स्टेप कम हो जाएगा, क्योंकि हमें इस दायरे को ही सॉर्ट करना है. Once you swap this element, you got, that means this set of elements have been settled down. आपको आगे करने की जरूरत नहीं है. अब उसके बाद क्या करना है आपको, आफ्टर दैट इसके उसको आप जब आपका 2 से एक्सचेंज हो जाएगा, 2 आ जाएगा ऊपर, 4 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, अप्लाई रीहीपीफाई फंक्शन ऑन दिस इंडेक्स आई, बिकॉज यही आपका कल्प्रिट है जो स्वैप होके आए. जिस यहाँ से आपको 0 इंडेक्स से ही आपको मैक्स हीपीफाई लगाना पड़ेगा. यू विल हैव टू कॉल फंक्शन मैक्स हीपीफाई एट द इंडेक्स 0. तो मैक्स हीपीफाई लगाया, दोनों में से चिल्ड्रन में से बड़ा कौन सा है, 4 बड़ा है,
तो 2 and 4 विल बी स्वैप्ड, 4 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, फिर ये अप्लाई करेगा 2 और 1 को कंपेयर करेगा टिल एंड तक जाएगा, डाउनवर्ड तक। 2 और 1 इट सेटल डाउन, इट सर्व्स द प्रॉपर्टी ऑफ द मैक्स हीप। तो आउटपुट आएगी 4 2 1 and 3। 7 को अब हम टच नहीं करेंगे। हीप साइज वी आर अज्यूमिंग इट इज रिड्यूस्ड बाय 1 स्टेप ऑफ द ओरिजिनल। अर्लियर हीप साइज वाज ओरिजिनल आपका हीप पूरा का पूरा था, क्योंकि हमें जब हमने एल्गोरिथम लगाया सिंपली हम n-1 से आपका हीप साइज शुरू करेंगे, एक स्टेप कम से। फिर से लॉजिक लगा, अब आपको लार्जेस्ट सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट विल अगेन बबल आउट अकॉर्डिंग टू मैक्स हीप प्रॉपर्टी। तो इसको और लास्ट एलिमेंट को फिर से आप कंपेयर करो। अब इसमें से बबल आउट जब करेंगे तो अब आपका रिसफलिंग के बाद मैक्स हीप का फंक्शन बन गया 4 2 3 1 7 सेटल डाउन हो चुका है। ये मैक्स हीप लगाने के बाद हुआ है। अब आपको क्या करना है, लार्जेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट को स्वैप कर दो, तो आ जाएगा 1 2 3 4। ये तो लकीली पहले ही आपका सेट नहीं, 1 2 3 4 2 3 का क्या बनेगा, 1 और 4 को यहाँ आ जाएगा आपका 1 ऊपर। when it comes 1 then 2 then 3, आपका 4 सेटल डाउन हो चुका है, 4 को आप डिस्कार्ड कर दो। अब मैक्स हीप फंक्शन फिर से 0 इंडेक्स पे लगाओ। तो 0 इंडेक्स में ये आपका मैक्स हीप नहीं है, तो 0 इंडेक्स में लगेगा, लार्जेस्ट से स्वैप आउट होगा, 3 ऊपर 2 इधर 1 इधर, तो आपका ये बन जाएगा। तब 3 आपका ऊपर आ गया, 3 2 1, दिस विल बी द फाइनल आउटपुट आफ्टर मैक्स हीप फंक्शन। ये बन गया। अगेन अप्लाई ऑन द रिमेनिंग। अब हीप साइज आपका एक स्टेप कम हो गया, ये आपका हीप साइज आ गया। अब फिर से आप 3 को डिलीट, रिकर्सिवली हमने ये काम आइटरेटिवली करना है। अब थर्ड को डिलीट करो, थर्ड विल रिप्लेस बाय लास्ट एलिमेंट, लास्ट इज इट्स इम्प्लिसिटली 1, तो 1 से रिप्लेस हुआ, 1 ऑब्लिक ऐसे 2 आ गया। ये मैक्स हीप नहीं है, मैक्स हीपिफाई फंक्शन ऑन द 0 इंडेक्स लगेगा। अब हीप साइज आपका सिर्फ 2 रह गया, तो मैक्स हीपिफाई लगा फंक्शन, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 1। अप्लाई दिस, नॉट टिल, यू हैव टू अप्लाई दिस टिल 1 एलिमेंट इज रिमेनिंग। अब अभी 2 एलिमेंट है, अब 2 एलिमेंट के लिए 2 को आपने उठाया, अब उसको स्मॉलेस्ट लास्ट एलिमेंट से स्वैप कर दिया। नाउ 1 एलिमेंट इज रिमेनिंग, नो नीड टू डू द सेम। जब आप इसको प्रिंट करोगे एरे की फॉर्म में 1 2 3 4 5 एंड 7 आपका आउटपुट आ जाएगा। एरे के एलिमेंट तो वहीं के वहीं है, पर आपका दायरा हर बार, हीप साइज हर बार कम हो रहा है। तो व्हाट इज द कोडिंग फॉर द सेम? कोडिंग ऑफ द सेम इज लास्ट i इज इक्वल टू n-1। आपने 0 और शुरू में एलिमेंट का इंडेक्स 0 होगा, और लास्ट एलिमेंट जो भी आपका हीप ट्री के अंदर होगा उसका इंडेक्स n-1 होगा। i शुरू करोगे n-1 से, 0 और n-1 को आप स्वैप कर दोगे, 0 और i इज इनिशियली n-1, 0 और n-1 को स्वैप कर दिया, तो n-1 वाला जो एलिमेंट, जो स्मॉलेस्ट, जो भी एलिमेंट, स्मॉलेस्ट नहीं था, एनी एलिमेंट, और ये लार्जेस्ट एलिमेंट आपका यहाँ पर आ जाएगा, लास्ट जो स्वैप किया, और यहाँ पर कोई और एलिमेंट आ गया। अब आपने इंडेक्स 0 को मान के मैक्स हीपिफाई करना है i के ऊपर। नाउ जस्ट सी, i हीप साइज कितना है इनिशियली, n-1। व्हाई इट इज n-1? क्योंकि हमने ऑलरेडी एक स्वैपिंग के बाद एक एलिमेंट कम कर दिया है, तभी हीप साइज आपका n-1 हो गया। रिमेंबर दिस थिंग, ऊपर हमने पूरा n दिया था। Earlier, let us suppose n was 10. We started from with 10 elements always to build a heap. बट यहाँ पर हम 9 एलिमेंट से शुरू करेंगे हीप साइज। ये डिफरेंट ट्रिक है, ये ध्यान में रखना। उसके बाद जब वो सेटल डाउन हो जाएगा, हम आई को फिर डिक्रीज कर देंगे, आई एक स्टेप कम हो गया, फिर A0 और A8 एलिमेंट एक स्टेप कम एलिमेंट कंपेयर होगा, दिस विल कीप ऑन आइटरेटिंग। फिर 0 आपका हीप का साइज n-2 हो जाएगा, एक स्टेप और कम हो जाएगा, एंड सो ऑन। i ग्रेटर देन 0 तक चलाना है, क्योंकि i इज इक्वल टू 0 वाला एलिमेंट इम्प्लिसिटली सेटल डाउन हो जाए। जैसे सिलेक्शन सॉर्ट के अंदर अगर एक एलिमेंट रह जाए, उसको हमें सेटल डाउन करने की जरूरत नहीं, वो इम्प्लिसिटली सेटल डाउन हो जाता है। एनी डाउट इन हीप सॉर्ट एल्गोरिथम यू कैन आस्क। ओके, ये हम आई विल बी एडिंग वन मोर रिकॉर्डिंग। नो डाउट देखने में लग रहा है कि मैक्स हीप, अदरवाइज मैक्स हीपिफाई फंक्शन क्या करता है, अगर आपने किसी भी ith इंडेक्स अगर आपका 0 है, तो if you just scan the previous slides, so if there are n nodes, the depth of that tree is roughly order of log to the base 2n होती है। तो आपका जो ट्री है मैक्स हीपिफाई फंक्शन, एक बार मैक्स हीपिफाई चलता है, वो log to the base 2n कंपैरिजन लेता है। I will give you one additional lecture slide where you can see this build heap function has got complexity order of n. But on average, if you are applying max heapify function for the 0th index, on average, otherwise से कम ही होगा, this take order of log to the base 2n comparisons one time if it is executing. This swap is being done just once. It will take constant time for a given I value.
if this I is repeated from n minus 1 till equal to 1, greater than 0 is equal to 1. If you go upper bound minus lower bound plus 1, this will be n minus 1 times. If you sum up all this value, the complexity of this chunk is n minus 1 into log of to the base 2 of n plus n. So this will lead to the complexity of n log n. I will give sharing one separate slide why it is order of n this case. So this will be exactly equal to n log n complexity. So heap sort running time is always order of n log n at the most.